Good morning students. In today's video, we will discuss the second model of modern approach, that is capital asset pricing model, which is also popularly known as CAPM. This topic you may refer the book of Dr. R.P. Rustagi. According to capital asset pricing model, the required rate of return of a security must be related to its contribution to the risk of the portfolio. स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी सिक्योरिटी का रिस्क इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसमें सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से कम नहीं कर सकते, जबकि अनसिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैपएम के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर ने अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से कम कर लिया है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। और क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करके कम नहीं किया जा सकता, तो इट इज़ दिस रिस्क फॉर विच द इन्वेस्टर गेट्स द रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ द सिस्टमेटिक रिस्क जिसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। So this is the meaning of capital asset pricing model, that rate of return of a security is related to the risk contribution, that to the systematic risk only, because it is assumed that अनसिस्टमेटिक रिस्क को इन्वेस्टर ने डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से मिनिमाइज कर दिया है, एलिमिनेट करके एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया है। Capital asset pricing model is based upon certain assumptions, and these assumptions include, like the very first one is investor is risk averse, that is to say investor जो है risk को avoid करना चाहता है। Second is the investor wants to maximize the wealth by maximizing the return and minimizing the risk. Next assumption is that investor may go for unlimited lending and borrowing at risk free interest rate, यानी कि जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है उस पर इन्वेस्टर जितना भी चाहे बोरोइंग कर सकता है और लैंडिंग कर सकता है। Another assumption is the assumption of perfect competition in the market, that is to say एक सिंगल इन्वेस्टर अपनी परचेजेस और सेल्स से सिक्योरिटी के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट is the market is efficient in the sense that investor has reduced the unsystematic risk by diversification. Next is the identical estimates for the risk and return by all the investors, यानी कि सभी इन्वेस्टर्स रिस्क और रिटर्न का एक जैसा अनुमान लगा सकते हैं। Last assumption is that securities are divisible. These are highly liquid. These may be anytime bought and sold in the market. So CAPM is based upon these assumptions. Next we have the explanation of the model, which is again based upon the concept that the investor is able to reduce the अनसिस्टमेटिक रिस्क बट सिस्टमेटिक रिस्क इज वेरी मच प्रेजेंट देयर, और यही सिस्टमेटिक रिस्क है, सुनियोजित जोखिम है, जिसके लिए इन्वेस्टर को रिवॉर्ड मिल रहा है। दिस मॉडल कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन सेज दैट RS is equal to IRF plus RM minus IRF into beta, where RS stands for expected return from a security, IRF stands for risk-free interest rate. Then we have RM, that is expected return on market portfolio, and then we have beta, the most important part, which is the measure of the systematic risk. So this equation gives us the रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने इसकी मीनिंग में पढ़ा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी बाय द वे ऑफ RS, और इसको हम फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री आपका जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है उसमें हम टोटल मार्केट पोर्टफोलियो में से रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट को माइनस करके बीटा यानी कि मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क को
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा लास्ट वाला पोर्शन, दिस शोज अस द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम किस लिए? क्योंकि इन्वेस्टर ने क्या किया है, सिस्टमेटिक रिस्क को बियर किया है। अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन से एलिमिनेट कर दिया, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क को बियर करने के लिए जो रिवॉर्ड इससे मिल रहा है वही रिस्क प्रीमियम है, और उसी की हेल्प से हमें पता चलता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी विच इज गिवन इन द मीनिंग ऑफ द CAPM. So this is the explanation of the CAPM. Next we have the limitations of the model. इसमें certain limitations are there, like the very first one is calculation of beta is a tedious task. ये जो बीटा की कैलकुलेशन है इसको कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट फॉर अ जर्नल इन्वेस्टर. Next we have hypothetical assumptions. The assumptions we have taken many in the case of CAPM. So these are many and hypothetical, जो कि CAPM की प्रैक्टिकलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाती हैं. Next and last is RS. This RS, required rate of return on security, is only a rough approximation of rate of return. ये सही अनुमान नहीं देता है, केवल एक रफ आइडिया देता है. So these in this video we have discussed the meaning of CAPM, assumptions of CAPM, the model itself and the limitations. Despite the various limitations of CAPM, it is most widely used by the investors for the calculation of required rate of return. Thank you.